Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we'll cover up the important topic which will be about कि tax models में हम कैसे जो taxation revenue के around distortions है जो tax models होते हैं उनको कैसे reduce कर सकते हैं. तो we'll be discussing different types of tax model. तो one is the optimal tax model. So इसमें बात यही होती है कि डिफिकल्टी यही है, चैलेंज यही है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि एक टैक्स रेट ऑप्टिमल टैक्स रेट है, कि वहां पे एफिशिएंसी भी मेंटेन कर सकते हैं और इक्विटी भी मेंटेन कर सकते हैं. सो इट इज मोर थ्योरेटिकल एंड इट इज लाइक इम्प्रैक्टिकल इन द एप्लीकेशन, and trade-off is between efficiency and equity in the tax policy. So the information administrative cost of designing optimal tax model has been found to be prohibitive, and therefore as a practical guide to the tax policy this has not been useful. So it is impractical and it is more theoretical, where it is difficult to implement also, and then deciding what is going to be the optimal tax rate. So the Harberger tax model, it is also a kind of, or we can say a subset of the optimal tax model. This is well grounded in history. So according to this second type of model, the Harberger tax model, efficiency, it is clearly desirable in the design of the tax policy. Administrative capability is equally, if not more important. तो दोनों important है, efficiency भी and administrative capability. तो दोनों होंगी, then again we'll be also able to focus upon the equity aspect. So principal concern ये है कि according to this approach, it is not to design a system that will be optimal, but emphasize the system will minimize the tax-induced distortions and at the same time be administratively feasible. Politically also it should be acceptable. तो बहुत सारे factors है even when we are talking about the tax administration or the collection of the taxes or deciding the optimal tax rate. So political acceptability भी होनी चाहिए. And rather than focusing upon कि क्या optimal tax rate होगा, कैसा model, कैसा system optimal हो सकता है, focus ज़्यादा होना चाहिए minimizing the distortion, the tax rate or the tax structure that we have. तो ये focus किया जाता है Harbinger tax model के अंदर. So this is more practical compared to the optimal tax model. And it suggests कि जो tax reformers है they should pay less attention to the economic methodology. वही कि ये थोड़ा theoretical ज़्यादा हो जाते हैं कि आप economic methodology, formulas और उन सब पे ज़्यादा focus करते हो. It should be to the best practice experiences. Experience based changes या policy formulation होनी चाहिए कि हम उसको easily implement भी कर पाए, and that is at the same time more practical also. Third model is the supply side tax model. So here it emphasizes the need to reduce the role of the state. Role of the state would be reduced. So again, here the market forces would come into the picture, and cutting the tax rate, particularly direct tax rates, to minimize the disincentives on work. So direct taxation में अगर हम बात करते हैं, today we have the like example of income tax rate. So ये बताता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में अगर हम रेट कट करेंगे तो जो डिसइंसेंटिव टू वर्क है वो भी कम हो जाएगा, एंड अगेन उसका इम्पैक्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों पे आएगा. सो प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल एम्फसाइज दैट देयर नीड्स टू ब्रॉडन द बेस. टैक्स बेस ब्रॉडनिंग की बात की जाती है विद मिनिमल एग्जाम्पशंस. रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होनी चाहिए, वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, एंड विल हैव टू हैव द लो मार्जिनल टैक्स रेट्स. सो ये बात कम कर रहा है कि टैक्स रेट ज्यादा होना चाहिए, बात कर रहे हैं कि टैक्स बेस और एफिशिएंसी अगर हम इंक्रीज ज्यादा करेंगे, role of state, intervention of the government, intervention of again the political forces should be less, again to improve the efficiency also. तो ये supply side tax model की बात ज्यादा कर रहे हैं, and again emphasizes on minimizing the distortion, the relative prices, and therefore approach emphasizes less on rate differentiation. तो rate differentiation भी इतनी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हम ये भी बात कर सकते हैं LAFO curve का भी. तो जो उसके पीछे आइडिया है वो यहाँ पे भी फिट होता है. अगर LAFO curve की बात करते हैं तो that's how it looks. और यहाँ पे हम बोलते हैं जो पीक लेवल है, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू हम प्लॉट करते हैं और यहाँ पे टैक्स रेट होता है. दिस इज द रेट. तो टैक्स रेट इस लेवल पे आने के बाद रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, और फिर अगर हम टैक्स रेट को और इंक्रीज करते हैं तो रेवेन्यू स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द लैफो कर्व. सो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, एफिशिएंसी और टैक्स बेस को वाइडन करने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन इंक्रीजिंग द टैक्स रेट. तो जनरल पैटर्न दीज रिफॉर्म्स इट हैज बीन टू अगेन ब्रॉडन द बेस ऑफ द टैक्सेस, हम बात कर चुके हैं.
to reduce the disincentives to work, save and invest. जितना कम टैक्स आप पे करोगे उतना ज़्यादा आप सेव करोगे, इतना ज़्यादा you'll have the incentive to work, उतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा ज़्यादा इनकम कमाओ, and you'll be also able to invest a larger amount of money. So broadening of the tax base helps to ensure horizontal equity. That is, यहाँ पे equity की बात हो रही है. Horizontally means again different state level पे भी अगर हम बात करते हैं, या even when we talk about the different community sections, तो वहाँ पे भी we'll see more equity in the backward classes or even in the upper classes. तो उनके बीच में equity होना important, तो उसको हम horizontal equity बोलते हैं. And it is desirable from the political economic point of view also, and because it reduces the influence of the special interest groups on the tax policy. So जब टैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम हर एक कम्युनिटी, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को कंसिडर करके चलेंगे. दैट इज वाई जो स्पेशल और वी कैन से पावरफुल इलीट ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस यहाँ कम हो सकता है. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, तो इसलिए कॉस्ट भी कम हो सकती है. So here we have the data. This is the level and the composition of the taxes in India, percentage form में. And although you can just go through it, 1970 और 1997 तक का data है, तो we can talk about pre-structural reforms, how the tax revenue और जो tax rate India में क्या था. तो direct taxes, of which corporation tax, personal income tax, agricultural taxes and others, these were there. So percentage changes की अगर हम बात करें तो direct taxation tax rate has increased during this time period 21% से 23%. And apart from this अगर हम देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, आज के टाइम में वी हैव इट इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी. सो यहाँ पे भी हमें रिडक्शन देखने को मिली है इनडायरेक्ट टैक्सेस में. और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस, सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव की टैक्स रेट को भी कम किया गया है. तो दिस इज वी कैन से इट वाज अ प्रोग्रेसिव स्टेप. टोटल टैक्स रेवेन्यू में ओके ये पूरा 100% यहाँ पे लिखे. टैक्स टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये जितना इंक्रीज होगा उतना ये हम बोलेंगे कि इट इज अ बेटर इंडिकेटर. टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब कि विद अ सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ रेट, उतने ही प्रपोर्शनेट अमाउंट में क्या हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो होना चाहिए. और दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द इंक्रीज इन दिस टैक्स टू जीडीपी परसेंटेज. तो जैसे पहले सिर्फ 11% ऑफ हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था दैट वाज कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जितनी हमारी टोटल जीडीपी है, तो उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुअली इट स्टार्टेड टू इंक्रीज, मोर अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू वाज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. So it was at 14.6%. And in this graph, we are seeing the share of the direct indirect taxes. So ये हम chronology भी बात करते रहते हैं न्यूज़पेपर में, not just direct indirect, but हम corporate tax, GST and income tax में हमेशा बात करते हैं कि chronology किसकी ज़्यादा है. So यहाँ पे 1980 और 81 के बीच में you can see कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का शेयर ज़्यादा रहा है. और डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स का और कॉर्पोरेट टैक्स का मिला के अगर हम बोले, सो इट हैज़ बीन समवेयर अराउंड 20% ऑन एन एवरेज. तो इसको हम लेके चल रहे प्री रिफॉर्म पीरियड के हिसाब से एक पूरा अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो ट्रेंड्स इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगेन ये इसी टाइम पीरियड के लिए 1980 और 1997 के बीच में. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस वी लुक एट द ट्रेंड. दिस इज द ट्रेंड, इट इज बीन मोर और लेस यूनिफॉर्म, ना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना ज़्यादा डिक्रीज हुआ है. एंड the share was, we can say, somewhere around only 2.5% of the GDP. This is the graph for the direct taxes. Indirect taxes में अगर हम बात करें 12 से we can say 14% भी क्रॉस हुआ है. And then it is declined in 1993. तो structural reforms के बाद हम बोल सकते हैं share of the indirect taxes of percentage of GDP has declined up till 1997. And total अगर हम trend की बात करते हैं तो this is the trend जो हमने अभी बात करी टैक्स टू जीडीपी रेशियो. तो ये वो शो कर रहा है, ये ट्राइंगल वाला ग्राफ जो है. तो हमने देखा कि इट वाज एट 14.1% 1997 में.
Then the 11 main scenarios where the tax rates change in India after independence. So this is very important topic even from the perspective of mains also. So the first one is from 1949 or 50. So post independence, India's first finance minister John Mathai, he reduced the Anna income tax up to rupees 10,000. So इतना ज़्यादा मतलब इसको जो technical points है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, but we can just have a broader look और broadly हमारे mind में वो चीज़ होनी चाहिए. So अन्ना जैसे एक अन्ना बोलते थे हम, एक पैसा और वो सब, उसकी यहाँ बात हो रही है. So in the first lab reduction of an anna with 9 pies and 2 annas with 9 pies, तो ये important नहीं है. Second, 1974-75 जब talk about national emergency was imposed, several changes were made into the income tax rate. तो tax rate में changes किए गए. And there was no income tax for individuals who earned up to rupees 6,000. Basic rate of income tax maintained in the income slab was over rupees 70,000. And joint impact of the income tax premium would be 77%. So we can just have a look कि कौन कौन सा time period में change हो. Then 85 और 86 के बीच में changes जो हुए, this is again the time period around जो Blue Star operation हुआ था and Prime Minister Indira Gandhi, she was assassinated. So income tax slabs then they were reduced from 8 to 4. And here this was done by Vishwanath Pratap Singh. So his role becomes important. And highest marginal rate of income tax decreased from 61.8%, इतना high tax rate, income tax rate होता था, and it was reduced to 50%. Then structural reforms के time period में, and we've talked about the contributions of former Prime Minister also Dr. Manmohan Singh. He reduced the slabs from 4 to 3 income tax rate slabs हो गए, and entry rate हुआ 20%, then 30% and 40%. तो पहले 50% था, तो 20% से entry level पे it was imposed. 1994 में then again फिर से हमने tax slabs को और adjust किया, and tax rates जो थे that were left unchanged. 1997 में P. Chidambaram presented the dream budget to change the prevailing rates. जो tax rate था 20, 30 or 40, then it was reduced to change to 15, 30 and 40. So only this entry level was changed and reduced. So this was changed to 10, 20 and 30%. So ये सारे change हो गए. तो अब lowest हो गया, we can say 10%, और जो पहले highest 40 था अब highest 30% बचा. Then 2005-6 में again, this is before the beginning of the global financial crisis. So here again announced the essential changes in the tax rate. तो more or less tax rates में ही हमने changes किए हैं. So यहाँ पे 10% income for 1 lakh to 1.5 lakh, 20% on 1.5 to 2.5. So those earning 1 lakh had to pay 30% as a tax. Then again 10-11. Now this is the time period of the post global financial crisis में हमने क्या changes किए. तो प्रणब मुखर्जी changed, people earning up to rupees 1.6 lakh, they will have to pay 0 tax. And then slabs ये थे 10, 20 and 30% 2010-11 में. 12-13 में 1.8 lakh to rupees 2 lakh for the general category of individual taxpayers, 10, 20, 30% यही हमने continue किया. और 2014-15 में we adopted the 2015 Finance Act, जहाँ पे wealth tax was eliminated from 2016-17. So then Arun Jaitley sir replaced the wealth tax with the surcharge of 2%. तो surcharge को हम बोलते हैं tax on tax. मतलब पूरा income tax calculate करके जो financial amount होता है उसके ऊपर फिर 2% surcharge impose किया जाता है. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं tax on tax. And super rich लोगों के ऊपर surcharge impose किया गया with a taxable income of above rupees 1 crore. So this was introduced in 2014-15 में हमने surcharge introduce किया इंडिया में for the first time. 17-18 में again Finance Minister Arun Jaitley introduced the current rate of taxation for individuals. Rupees 5 lakhs do not have any tax liability. तो अगर आपकी annual income rupees 5 lakhs है तो आपको कोई income tax pay नहीं करना पड़ता था during this time period. And new tax regime, अभी हमने previous budget में भी देखा था, new tax regime was introduced. And so ये सारे changes थे जितने भी taxation और tax slabs में या tax rates में क्या क्या changes हुए, क्या हमने new चीजें add करी. So यहाँ पे we can take up the doubts and then end with this particular part. No answer. Okay, so thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to our channel.